and today we are going to study Garbh Sharir. In this video, you will learn about Garbhotpatti and Garbhavriddhi. This topic carries 25 marks. शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इत्युच्यते. This shlok tells us what is Garbh and says that combined state of Shukra and Shonit in Garbhashay intermixed with Prakritis which are Asht Prakriti and Vikar which are Shodash Vikar and ridden by Atma is called Garbh. जब शुक्र और शोणित गर्भाशय में इंटरमिक्स होते हैं और अष्ट प्रकृति और षोडश विकार और जब आत्मा उसके अंदर आ जाती है तो हम उसे गर्भ की संज्ञा देते हैं. अब ये तो हमने देखा कि गर्भ किसे कहते हैं. आगे चलकर हम देखेंगे कि अब शुक्र किसे कहते हैं. व्हाट इज शुक्र? शुक्रम तदस्य प्रवदन्ति धीरा यद्धीयते गर्भ समुद्भवाय वायवग्नि भूम्य अंबु गुणपादवतद षड्भयो रसेभ्य प्रभवश्च तस्य. I'll give you a tip. Now try to read all the shlokas कि उनको आप लोग तोड़ तोड़ कर पढ़ें, एक शब्द को अलग और दूसरे शब्द को अलग. The male factor that takes part in the formation of Garbh is called Shukra, which is composed of Vayu, Agni, Jal and Prithvi Mahabhut. The Shukra is formed by the food substances having all 6 रस. पंच महाभूत और षड रसों से मिलकर शुक्र की फॉर्मेशन होती है. शुक्र गुण. अब हम देखेंगे कि शुक्र के क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि देखकर हम उसे शुद्ध शुक्र की संज्ञा दे सकते हैं. स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधि च शुक्रम इच्छन्ति केचितु तैल शौद्र निभम तथा. अब शुक्र इज व्हाइट इन कलर, हैज क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस, स्वीट इन टेस्ट, madhu in gandh, snigdh pichil sandra guru in consistency and overall appears like tail and shodra. Shukra possessing these characters can be called as Shuddh Shukra. Now, it is suitable for Garbh Sthapana. शुक्र सफेद होता है, मधुर होता है, गंध में मधुर होता है और तेल की तरह होता है. शुक्र प्रमाण. Now we'll see the quantity of Shukra. Quantity of Shukra dhatu is Ardhanjali as per Acharya Charak. Now we'll see what is Artav or Shonit. Rasadev Striya Raktam Rajah Sangyam Pravartate Tadvarshad Dwadashad Urdhavam Yati Panchashata Shayam. Artav is made up of all the 6 ras. It is blood red in color. It stays for 1 month in the canals of women and then comes out from yoni with the help of Vayu. Menarche occurs at 12 years of age. Menopause occurs at 50 years of age. आर्तव जो है उसको ओवम के साथ में कंपेयर किया गया है. ये रेड कलर का होता है और वेजाइना से बाहर आता है with the help of वायु. कैरेक्टर्स ऑफ आर्तव. आर्तवम शोणितम त्वाग्नेयम रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भ कुच. Artav is Agni, has characteristics of Rakt, forms Garbh and is also essential for life. Though the dominant Mahabhut in this is Tejas, however, other also exist in small quantities. Artav के अंदर अग्नि की प्रधानता होती है. आर्तव प्रमाण. The quantity of Artav. The praman of Artav is said to be 4 अंजलि. शुद्ध आर्तव के लक्षण. शाशाश्रिक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षारसोपमम तद आर्तवम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजयेत. गुंजाफल सुवर्णम च पद्मालक्तक सन्निभम इंद्रगोपक संकाशम आर्तवम. Artav should be unctuous, bright red in color like Padma, Gunjafal, Laksharas, Indragop, Shasha Asrik and free from pain and burning. This menstrual blood does not cause any permanent stain on cloth. The quantity is neither very scanty nor very excess. आर्तव लाल रंग का होता है. इसको
रेड लोटस के साथ में कंपेयर किया है, लैक जूस, एब्रोसीड, कोकनियल एंड रैबिट के ब्लड के साथ में कंपेयर किया है। इसके अंदर कोई पेन नहीं होता, लेकिन भाव मिश्र ने बोला है अगर प्रकृति और दोष किसी स्त्री के बिगड़ जाते हैं तो वो अपने सिम्टम्स दिखाएगा, जैसे कि पेन और बर्निंग। गर्भाधान, what is the appropriate age for conceiving? In males it is 25 years, in female it is 16 years according to Ayurveda. As per Ayurveda, the role of ahar and vihar must be considered for healthy progeny. Now we'll see some diets. Diet for female include the kind of ahar which increase pith and helps in proper formation of artav, and some aushadhi are Snigdhafal Ghrit, Mahakalyana Ghrit. Diet for males is Madhur Dravya Pradhan Ahar, Shiram, Ghrit and Shalyodhan. These diets should be given to male and female for the proper formation of Bij. What is the proper time of conjugation? Yugmeshu tu puman prokto divaseshu anyatha abala. Now we will see the role of Panch Mahabhut in Garbh Poshan. Tam चेतनावस्थितं वायुर्विभजति तेज एनं पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी संघन्ति आकाशं विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादिभिः अंगरूपैस्तदा शरीरम इति संज्ञा लभते. Couples who are desiring male progeny should perform coitus on Yugma days, which are even days for female child, on Ayugma, which are odd days. They should perform the coitus. Role of Panch Mahabhut. According to Ayurveda, the Sharir has been stated to be composed of Panch Mahabhut. It is believed that Mahabhut not only participates in constituting the body, but the entire universe has come out of them. In true sense, Mahabhut, if looked upon very precisely, they appear to share only the material aspect, while the life principle or consciousness is controlled by Jivatma. महाभूत फॉर्म ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, उनके अंदर कॉन्शियसनेस जो है वो जीवात्मा डालती है. रोल ऑफ त्रिदोष ऑन गर्भ. हमारे शरीर के तीनों दोषों का गर्भ के ऊपर क्या रोल होता है? वायवकाश धातुभ्याम वायु आग्नेयम पित्तम अंभ पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा. This shloka says that Vayu and Akash, the Agni and Jal and Prithvi, they constitute Vayu, Pit and Shleshma. The role of these functional units are so vital that they cannot be spared even on the cost of life. So much so that Maharishi Sushrut clearly accepted the maintenance of Sharir is directly based on Vat, Pit and Shleshma. It says that Vat is formed by Vayu and Akash, Pit is formed by Agni and Shleshma is formed by Jal and Prithvi. Ling Vinishchay, which is sex determination, Tatra Shukra Bahulyat Puman, Artav Bahulyat Stri, Samya Udbhayo Napunsak Miti. As per classics, the predominance of Shukra leads to the formation of male child, the predominance of Artava leads to the formation of female child, while the predominance of both leads to the formation of a hermaphrodite progeny. आप लोगों को अगर गर्भशारीर के नोट्स चाहिए तो आप इसे पोज करके और वहीं से लिख लें और नोट्स बना लें. द प्लासेंटा फॉर्मेशन और अपरा निर्माण. गृहीत गर्भाणाम आर्तववाहनाम स्त्रोतसाम वर्तमन्ये अवरुद्धन्ते गर्भेण तस्माद् गृहीत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते ततस्ततः प्रतिहतम ऊर्ध्वम आगतम परम चोपचीयमानाम परेत्याभिधीयते शेषम च ऊर्ध्वम तरम आगतम पयोधरा अभिप्रतिपद्यते तस्माद् गर्भिण्य पिनोन्नत पयोधरा भवन्ति. The artavah strotas of a pregnant woman becomes occluded by the presence of garbh. This is the reason for no menstruation during pregnancy.
Thus, because of this, the menstrual fluid that is incapable of moving downwards begins to move upwards. A part of it gets accumulated and contributes the formation of placenta and contributes to the breast milk. कहने का अभिप्राय यह है कि गर्भवती महिला में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है और जिस भाग को नीचे की ओर आना चाहिए था वह ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। उसमें से एक भाग अपरा का निर्माण कराता है, दूसरा भाग स्तन्य का निर्माण कराता है। ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर आप लोग इसे याद करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, मार्क्स स्कोरिंग भी है ये। Now we'll see मासानुमासिक गर्भवृद्धि कर्म, month wise development of embryo. For the first month, प्रथमे मासे कललम जायते. In the first month of development, embryo attains the shape of chestnut, which is soft from inside and can be called as kalal. Now second month, द्वितीय शीत ओष्म अनिले अभिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घने संजायते यदि पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसक चेदरबुद मिति. It is said that in second month, when it is processed by sheath, which is kaph, ushma, which is pith, anil, which is vayu, it becomes a ghan mass, which is solid mass of panchamahabhut. This ghan mass, if appears as pind, for example like oval shape, then the gender of product of conception will be male, and if it appears as peshi, like elongated muscle, then it will be female. If arbud, as a tumor shape, then a napunsak will be born. Now in third month, तृतीय हस्तपाद शिरसाम पंचपिंडका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागच्च सूक्ष्मो भवति. According to Sushrut, Gatra Panchak, which are 5 buds, are also formed, and from these 2 lower limb to upper limb and a head will be developed. All the parts of the body and their subdivisions appear in minute form. Now fourth month, चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभागे प्रव्यक्तो भवति. गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावत चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति. According to Sushrut, in fourth month अंग प्रत्यंग विभज, like demarcation of organ is more predominant. The chetna dhatu also gets manifested because hriday, which is heart, becomes obvious. The seat of chetna, which is atma, is hriday. Therefore in fourth month, garb desires things to taste, to smell, etc. through the mother. The woman now possesses 2 hearts and also known as the hridini. Now the fifth month, panchame maneh prati buddhataram bhavati. In fifth month, the man or mind of the fetus begins to function. Thus, the fetus forms a subconscious state. Now, the shloka for the 6th month is Shashto Buddhi. In this stage, more enlightenment of Buddhi occurs. The Buddhi manifests in 6th month of development. Charak opines that the fetus becomes endowed with more energy and complexion at this stage. For the 7th month, सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग है प्रव्यक्त तरह. According to Sushrut, in 7th month, all parts and their subdivisions become more obvious. Means we can see them clearly by ultrasonography or any other method, but we can see them clearly at the 7th month. Now the 8th month, अष्टमे अस्थिरी भवत्या ओजः तत्र जातेश्चन जीवे निरोजस्तवाद नैरित भागत्वाच ततो बलिम मासम ओदनम अस्मय दापियेत. In 8th month, the ojas becomes unstable, shifting from the mother's side to the fetus and vice versa. Hence, a child born in 8th month does not survive after birth due to absence of ojas. Hence, to avoid premature birth of child, special offerings are made during 8th month of the pregnancy. Now,
we'll see the shloka of the 9th month. नवम दशम एकादश द्वादशा नाम अन्यम अस्मिन् जायते अतो अन्यथा विकारी भवति. Vagbhat had said that stressing upon more on gestation period, Vriddha Vagbhat says even a single day after completion of 8th month, its normal delivery time till the end of 1 year afterwards, it will be abnormal or vikari. गर्भ संभव सामग्री ध्रुवम चतुर्नाम सानिध्याग्धरे स्याद विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम सामग्रे आद अंकुरो यथा. This is the shlok dealing with the factors composing the garbh. Maharishi Shushruta says that it is formed by the coordination of 4 factors. Now we'll see them in detail. First is Ritu. It is the appropriate time for conception. During this period, only Bijodgam or Phalodgam means ovulation occurs, hence conception is possible. The second one is Kshetra, which is Yoni Marg or Garbhashay. Third one is Ambu. Ambu is the Ahar, which nourishes the Garbh. And Bij is the fourth. It indicates both Shukra and Artav in male and female respectively. Bij is the substance responsible for the reproduction. Bij iti Shukra Shonite. It says Bij refers to the male pronucleus, which is Pumbij or sperm, and the female pronucleus, which is Tribij or ovum. अब हम बीज भाग देखेंगे. बीजस्य अंग प्रत्यंग निर्वर्तत को भागो बीज भाग है. The बीज भाग are the component lying inside the बीज and holds responsibility of the development of different organs of body. Now we will see what is बीज भाग अवयव. बीज के अंदर वाला भाग होता है ये. मनुष्य बीजम ही प्रत्यंग बीज भाग समुदायात्मकम स्वस्य हरा प्रत्यंग समुदाय रूप पुरुष जन्मकम यस्य यस्य ह्य अंग व्यवस्य बीजे बीज भाग उत्पत्तो भवति तस्य तस्य अंग अवयवस्य प्रकृति रूप जायते न उपजायते च अनुपतापात. ये दोनों श्लोक हैं और आपको इन्हें लर्न करना होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर इंग्लिश और हिंदी फॉर्म. द पार्ट ऑफ सीड responsible for formation of particular organ if vitiated will result in the vitiation of respective organ. ऐसा कहा जाता है कि बीज के अंदर काफी सारे भाग होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाने के लिए. अगर उस भाग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो स्पॉइल हो जाता है तो एज अ रिजल्ट वो ऑर्गन भी स्पॉइल्ड ही फॉर्म होगा. अब हम गर्भोत्पादक भाव देखेंगे. ये गर्भ की प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स हैं. तत्र गर्भस्य पित्रज मात्रज रसज आत्मज सत्वज सातम्य जानी शरीर लक्षाणी. Along with some factors which are Panchmahabhut, another 6 factors has been described by Acharyas. These are Matraj, Pitraj, Atmaj, Satmaj, Rasaj and Satvaj Bhav. Garbha is formed and developed by the combination of these bhav. Now we'll see them in detail individually. The first bhav which we'll see is Matraj Bhav. Mas Shonit, Medo, मज्ज हृन्नाभि यकृत प्लीहांत्र गुद प्रभृतानि मृदुनि मातृजानि. मांस शोणित मेद मज्जा हृदय नाभि यकृत प्लीहा आंत्र गुद एक्सेट्रा which are the soft parts, they are derived from the mother. दूसरा भाव है पितृज भाव. गर्भस्य केश शमश्रु लोम अस्थि नख दंत सिरा स्नायु धमनी रेतः प्रभृतिनि स्थिराणि पितृजानि. All the hard parts are derived from the father side like hairs, bones, nails, teeth, veins, etc. Now the third one, आत्मज भाव. इंद्रियाणि ज्ञान विज्ञानम आयु सुख दुख आदिकम च आत्मजानि. In गर्भ इंद्रिय ज्ञान आयु सुख दुख जन्म, these features are derived from गर्भ itself. सातम्यज भाव
वीर्यम आरोग्य बलवर्णो मेधा च सातम्य जानी। वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण, मेधा, these are the features derived from सातम्यज भाव। अब हम देखेंगे अगला भाव रसज भाव। शरीर उपचयो बलम वर्ण स्थिति ह्रानिश्च रस जानी। शरीर की जो ग्रोथ है, स्ट्रेंथ है, कॉम्प्लेक्शन है, वो डिपेंड करता है जो कि हम खाते हैं, वॉट एवर वी ईट। रस गिव्स द नरिशमेंट टू द बॉडी एंड एज अ रिजल्ट अगर हम सही से हमारे शरीर में रस जा रहा है तो हमारे सारे दोष बैलेंस्ड होंगे। अब हम सत्व भाव देखेंगे। सात्विकम शोचम आस्तिक्यम शुक्ल धर्म रुचि मृति। द चाइल्ड विल हैव सत्व गुण प्रधान, will have mental and physical cleanliness, will be intelligent and religious. The Matraj, Pitraj, Atmaj bhav can't be changed as they come from parents and Purva Janam Sanskar respectively. The other three bhav can be changed by proper meditation and ahar vihar. अब हम हर ऑर्गन का डिटेल डेवलपमेंट देखेंगे। अंग प्रत्यंग उत्पत्ति। गर्भस्य यकृत प्लीहानव शोणित जव शोणित फेन प्रभव फुफ्फुस शोणित किट्ट प्रभव उंडुक असृज श्लेष्मणश्च आपी यह प्रसाद परोमतः तम पच्यमानं पित्तेन वायुश्च आप्य अनुधावति ततो अस्य आंत्राणि जायन्ते गुदम्बस्तिश्च देहिनः उदरे पच्यमानानाम् आद्यमान द्रवं सारवत् कफ शोणित मासानां सार जीवः प्रजायते यथार्थम् ऊष्मणा युक्तो वायु स्रोतांसि धारयेत् अनुप्रविश्य पिशितं पेशी विभज्यते तथा मेदसः स्नेहम् आदायम् सिरास्नायु त्वम अनुयात सिराणाम तु मृदु पाकः स्नायूनाम च ततःखरे आशय अभ्यास योगेन करोत्य आशय संभवम रक्त भेद प्रसाद आद वृक्को मास सृक कफ मेद प्रसादाद्रिक वृष्णव शोणित कफ प्रसादजम हृदय। अब ये पूरा श्लोक आप लोगों को लर्न नहीं करना है। अगर हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन लर्न इट्स हिंदी पार्ट, आप उसे अच्छे से करो, एग्जाम में लिख के आओ और वो भी काफी सही रहेगा। बाकी ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब श्लोका का हिंदी में मतलब देखते हैं। सुश्रुत सेज यकृत विच इज लीवर, प्लीहा विच इज स्प्लीन ऑफ गर्भ गेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम रक्त, फुफ्फुस विच आर लंग्स आर मेड अप ऑफ फ्रोथ ऑफ रक्त, उंडुक इज मेड अप ऑफ मल ऑफ रक्त, the sar of shleshma and rakt gets metabolized by pit and vayu and then forms antra which is intestine, gud which is anus, basti is bladder, tongue is made up of essence of kaph rakt mas, the vayu and ushma canalizes the throat which are channels, then enters into mas and peshi. The oily portion of med forms sira which are vessels and snayu which are tendons by mridu and khar pak respectively. Vayu by repeated action forms ashay which are cavities, vrika which are kidneys are made up of essence of rakt and med. The hriday which is heart is formed by essence of rakt and kaph. Thank you, hope it helped you. If you have any doubts leave them in the comment section.